Hello everyone. So today we are going to continue from where we left yesterday. हमने कल फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. नाउ विल बी मूविंग कि हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे प्लेस कर सकते हैं. मोस्टली इधर बात होएगी लाइक द प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? देयर विल बी अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दैट आल्सो आफ्टरवर्ड्स, बट उससे पहले लाइक विल जस्ट सी लाइक कि मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ दैट प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज जिसके अंदर न्यूमरेटर जो है दैट इज स्मॉलर as compared to the denominator. Denominator large होता है, ठीक है. So these are considered as proper fractions. Why they are considered as proper fractions, I'll tell you afterwards. But अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है कि the numerator is small and the denominator is large, in that case वो जो आपका नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/2 है, 1/2 will be less than 1 and it will be greater than 0. ऐसा नंबर आपका जीरो से तो बड़ा होगा बट इट विल बी लेस देन वन. तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे जब भी प्लेस करते हैं तो विल बी मेकिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड देन इन बिटवीन दैट स्टफ विल प्लेस दिस फ्रैक्शन. जैसे यहाँ पे आपको 1/2 का दे रखा है, तो 1/2 बेसिक अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो व्हाट डज 1/2 मीन्स. 1/2 का मतलब होता है हाफ. तो अगर हम 0 और 1 मान लो एक बनाते हैं नंबर लाइन, जैसे इन लोग ने यहाँ पे बना रखी है. एक जस्ट दे ड्रॉड अ नंबर लाइन, उसमें उन्होंने 0 बनाया 1 बनाया एंड दे डिवाइडेड दीज टू दिस होल लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 1 इनटू हाफ. तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे ने इसको हाफ पे रखा है दैट इन इटसेल्फ डिनोट्स हाफ. ओके, 1/2. Like what 1/2 means that we have divided 0 and 1 into two equal parts, and this is one part of the two parts up to this point. This point tells that this is one part of the two parts. That's why we call it as 1/2. मान लो अगर मेरे को 1/3 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, 2/3 करना है, तो इन दोनों चीज में भी क्या है कि लाइक ये छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, so it will lie in between 0 and 1. तो अगर मैं 1/3 इधर लिख रहा हूँ, that means I'll have to divide 0 and 1 into three equal parts, 1, 2, 3, and the first part will be written as 1/3 because it is covering one part of the three equal parts, and this here this point will be denoted as 2/3, and the last point will be denoted as 3/3. So that's the case with if we want to draw 1/3 or 2/3. See, they have written also here it as like 2/3. और अगर आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो इट विल बी बेसिकली 1. यहाँ पे थ्री इक्वल पार्ट दोनों कंप्लीट, तीनों कंप्लीट हो गए, तो दैट इज मेकिंग एक्चुअली वन होल पार्ट. इट इज रिटन एज 3/3. जीरो को हम 0/3 भी लिख सकते हैं because that what does zero exactly means in this context. It is like it means कि ये zero part cover कर रहा है of the three parts. That's why we can write it as 0/3 also. I'll just give you one example. For example, we have to draw this 3/5 on a number line, or rather, a better example would be of 1/10, 0/10, 5/10, and 10/10. How can we draw this on a number line? So that I'll be doing with the help of paint. What you gotta do is first of all make a proper line with the help of scale in our notebook. Right now I'm not having scale with me, like I cannot use scale and a ruler on this laptop, so I'll just do it with a rough hand. But when you do in your notebook, उस टाइम आपको पूरा proper ruler या फिर scale use करना पड़ेगा. What you do, you make two arrows on the ends of this line, which denotes that this line is never ending. It's going to the infinite, like infinitely वो move कर रहा है दोनों डायरेक्शन में. फिर एक पॉइंट तो आपको इधर जीरो रख देना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे. Now what you gotta do is like if you want to make 1/10, 0/10, 1/10, 5/10 और 10/10, ये सारे हमको ड्रॉ करने हैं नंबर लाइन पे. तो क्या करना है आपको, बेसिकली स्केल या फिर रूलर रखना है जीरो पे, एंड वी हैव टू डिवाइड द 0 and 1 into 10 इक्वल पार्ट्स. बट हमें उसके लिए इजी वे क्या है, बेसिकली हम रूलर रख सकते हैं एंड at 1 centimeter we can denote as a one equal part, and that 2 centimeter will be two equal parts, then 3 centimeter will be three equal parts, and so on. So ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, and the place where 10 centimeters coming on scale, at that place you'll have to write as 1 because it is completing 10 equal parts. We had to divide 0 and 1 into 10 equal parts. अब हमने यहाँ पे कंसिडर करा है दैट वन पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बट अगर अगर आपको मान लो अगर वो दे रखा होता सिर्फ 2/3 समथिंग लाइक दिस, है ना, ये आपको ड्रॉ करना है तो 3 सेंटीमीटर क्वाइट छोटा। तो आप उसको अगर आपको अच्छी तरह दिखाना है, शो करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 2 सेंटीमीटर एज वन इक्वल पार्ट ऑल्सो। ठीक है, दैट टाइम ऑन द स्केल you'll have to draw up to 6 centimeter, but not to confuse you at this point I won't be going in that direction। अभी 1 centimeter is also one part अपन लेके चलते हैं। ठीक है, तो that is the thing here, and basically what will be 0 by 10? 0 by 10 will be, we are covering 0 part out of 10, so this will be written as, this is basically 0 by 10, this could be written as 0 by 10, and see how they have written here in this book. This 1 is equals to 3 by 3, like this they wrote, so we can also write like 0 is equals to 1 by 10, and this portion will be what? This is 1 part of 10 parts, so we could write here 1 by 10, and 5 by 10 will be what? 1, 2, 3, 4, 5. This one, this point here will be 5 by 10, and the last point will be 10 by 10. You have to always remember that when numerator and denominator both are equal, that time will be that that fraction will be equal to 1. When numerator and denominator are both equal, that fraction will be always equal to 1. Okay, so this is how we draw any point on a number line, on any proper fraction on the number line. What are proper fractions? In all of these fractions which they have mentioned here, जितने भी इनने fractions यहाँ पे mention कर रखे हैं, we can see that the numerator is smaller than the denominator in all of them. सारे में आपको ये दिखेगा। So the fractions in which the numerator is smaller than denominator are less than 1. ये सारे fractions जितने भी होंगे 1 से छोटे हैं। So these types of fractions will be considered as proper fraction. Why they are considered as proper fraction? Because ये सारे fraction क्या represent कर रहे हैं? And they are representing part of a whole, है ना। मतलब अगर मैं 3/4 लिखता हूँ तो आई एम सेइंग दैट 3 parts of 4 parts, 1 parts of 2 parts, 9 parts of 10 parts, 0 part of 3 parts, 5 part of 8 parts. So when we read about the definition of fraction, we read that it's a part of a whole. When it represents any number, represents part of a whole, that is a fraction. So this we can clearly see this is happening in these all cases, and that's why these fractions will be considered as proper fractions. इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो शो करता है नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू विच द होल इज डिवाइडेड। जो होल चीज है, अब मान लो एक पिज्जा है, वो मैं अगेन बार बार पिज्जा वाला एग्जांपल यूज करता हूँ, बट नॉर्मली मान लो एक पिज्जा है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो दैट होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट 4 इज denoted in denominator, and someone ate 3 parts out of it। तो वो जो न्यूमरेटर है वो shows number of part which has been considered। जिस पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसपे हम कन्वर्सेशन में यूज कर रहे हैं, पे बात करने में यूज कर रहे हैं, the one part which we are considering, that will be written as a numerator, that I ate 3 parts of 4 parts of the pizza, like 3/4 of the pizza I ate, so this 3 will come in the numerator and 4 will, the whole मतलब whole this जिन parts में divided है, that will be coming in the denominator side। Therefore in a proper fraction the numerator is always less than the denominator, इसलिए numerator हमेशा denominator से छोटा रहेगा proper fraction पे। ठीक है, तो I think for today this much is enough। Like we just kind of understood that how we can draw any fraction on a number line, and also what is a proper fraction। हम ये बस ये question के like go through कर लेते हैं एक बार, the questions which have they mentioned here। उसके बाद like we'll be covering the improper fractions and mixed fractions in the next video। तो इसमें first question है, give a proper fraction whose numerator is 5 and denominator is 7। So it's quite easy, we could just directly write 5/7, whose denominator is 9 and numerator is 5, so the answer will be 5/9 here in this case। Whose numerator and denominator add up to 10, how many fractions of this kind can you make? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब अपन ऐड करते हैं तो इट कम्स 10 एंड इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी 0/10, इट कुड बी 1/9, इट कुड बी 2/8, इट कुड बी 3/7, इट कुड बी 4/6, इट कुड बी 5/5, है ना।
Like these are all the fractions which could be made up by when numerator and denominator add up to 10, and these all are proper fractions. अगर मैं 6 by 4 चला गया, it's not a proper fraction. It will come into the category of improper fraction. That's why I cannot write it here. So these are all the numbers which can मतलब इसके अंदर आप देखो 0 + 10 को ऐड करोगे तो it will give you 10. If you will add 1 + 9, it will give you 10. If you add 2 + 8, it will give you 10. That's where these all number will come here. Now whose denominator is 4 more than the numerator. Denominator 4 ज़्यादा है numerator से. The numerator, this could be like infinite amount of proper fractions I can make like this. For example, I could make 1 by 5, 2 by 6, 3 by 7. What I'm doing here exactly is, अगर मैं numerator देखूं, so denominator is 4 times greater than the numerator. How? अगर मैं 1 में add करूं 4, तो it gives me 5. If I add 2 plus 4, then it gives me 6. If I add 3 plus 4, it gives me 7. तो ऐसे में अगर infinite amount तक भी चला जाऊं तो it won't end. ठीक है? So that is one thing. Another thing is, how will you decide by just looking at it whether the fraction is less than 1? So just बस देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सा fraction is less than 1? We could know it by looking just by seeing that if the numerator is smaller than the denominator, then it will be less than 1. And how can we know if it is equal to 1? मैं बता सकता हूँ, if the numerator is equal to denominator, then it is equal to 1. ठीक है? So here what symbol will come? 1 by 2 is less than 1, 3 by 5 is less than 1 is greater than 7 by 8, 4 by 4 is equal to 1, and 2005 is equal to 1. So I think this much is enough for today. Now improper fraction and mixed fractions will be covering in our next video. So thanks for watching.